उस्मानिया यूनिवर्सिटी और अमरीकी कौंसलेट हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम उर्दू सहाफ़ियों के लिए मुनक़िद असनादात की तक़सीम प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद हुआ। हैदराबाद शहर के सालार जंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में कॉन्वोकेशन तकरीब मुनक़िद की गई। अमरीकी कौंसल जनरल जेनिफर लॉर्सन और तेलंगाना डीजीपी अंजनी कुमार ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तरबियत मुकम्मिल करने वाले सहाफ़ियों को असनादात दिए। क़ब्ल कौंसल जनरल जेनिफर लॉर्सन ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि गलत मालूमात जमहूरियतों को कमज़ोर करती है। उन्होंने सहाफ़ियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया। दरियासना तेलंगाना डीजीपी अंजनी कुमार ने भी फैक्ट चेक की तरबियत मुकम्मिल करने वाले सहाफ़ियों से खिताब करते हुए उनसे दरख्वास्त की कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जाली खबरें न फैलाई जाए। उन्होंने अवाम से भी अपील की है कि वो मैसेज फॉरवर्डिंग के रुझान पर अमल न करें। आपको बता दें कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे सहाफ़त व तहसील आमा ने अमरीकी कौंसल जनरल हैदराबाद के ताउन से उर्दू सहाफ़ियों के लिए तरबियत का अहतमाम किया था, जो कि 8 माह तक जारी रही। 37 उर्दू सहाफ़ियों ने तरबियत मुकम्मिल कर ली है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे सहाफ़त के सरबराह प्रोफेसर स्टीवनसन कोहेर ने हाज़रीन का खैर मक़दम किया और तरबियती मंसूबे में ताउन पर अमरीकी कौंसलेट जनरल का शुक्रिया अदा किया। इस मंसूबे के अखराज व मक़ासद बयान करते हुए उन्होंने कहा कि इसका मकसद उर्दू सहाफ़ियों को हक़ाइक़ की जाँच पड़ताल की महारत के साथ बाइख्तियार बनाना है। आपको बता दें कि तरबियत हासिल करने वालों में तकरीबन 30% ख़वातीन सहाफ़ी और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तुलबा भी शामिल हैं। मुल्क भर के माहिरीन ने सीनियर सहाफ़ी एम.ए. माजिद की सरबराही में शुरा के लिए लेक्चर दिए और वर्कशॉप्स भी मुनक़िद किए गए। Good afternoon, everyone. Thank you for being here for this important event. I especially want to recognize and thank colleagues and esteemed guests who are here with me today as well, Mr. Anjani Kumar, Mr. Alangarayama, Professor Kohor, and Mr. Majid, of course. Thank you so much. I would also like to take this opportunity to pay tribute to Mr. Zahiruddin Ali Khan, Managing Editor of CSI Today, who passed away on Monday. He was a wonderful human being, an alumnus of one of our exchange programs, and he rendered great service to the Muslim community of this region. So I just wanted to pay tribute to him. So dear journalists from different media houses, I'm very happy once again to see Osmania University under the leadership of Professor Ravinder helping the media fight disinformation and fake news. As you all know, fake news and disinformation has become one of the more common threats to our societies and democracies. I say that around the world, in the United States too, of course. Attempts are being made to disrupt the peace and growth of our nations through false and purposefully misrepresented information. And these attempts are not just spontaneous, they're well planned. Elements working behind such unethical practices do not want democracy to prevail. Disinformation is not simple. On the contrary, it's constantly evolving and changing and getting more and more complex. We see that on social media, we see that on television, we certainly see that in the mainstream news as well. It's like every day we hear that bad is good, that more is less, that the right is wrong. I mean, it's just completely opposites. And together we need to work and figure out ways that we can combat that. So if journalists could be manipulated by tweaking facts, and they were to pass that same unverified information to the public, it becomes a real problem. The simple fact that is democracy rests on a free and open press, and if the press doesn't have correct information, they can't help us find out what the real information is. Which is why we think this training is so important, and why we've been happy to have done this with the Telugu group and then now with the Urdu group here. The objective has been to provide all of you, journalists, with enough tools and techniques, and I know that it sounds like the modules that you've done, it took more than 40 hours, but it sounds like it could have taken hundreds of hours. You seem to have covered so many different topics. We don't want any of us being the victims of conspiracies of disinformation. The basic job of a journalist is to verify that the news, and when they're looking at news from different sources, is to verify its authenticity and its truth. And we hope that this training has helped you become more adept at that.
what you're learning now is not going to help your newsroom just be more responsible, but will help us create a network of well-informed and responsible journalists. We, of course, could not have done this without Osmania University, so thank you for your support and for helping us create an awesome batch of Urdu journalists who can join those who have already been trained. Thanks to each of you for taking time out, and this is a voluntary program, and you have full-time jobs as well, so taking time off and from after hours, weekends, things like that, to come together both online and in person. Really, really thank you for taking that time. Congratulations on finishing the program, and I look forward to seeing this, the work that you're doing going on in the future. And please know that the U.S. consulate here wants to continue to be a resource for you, as you now too are alumni of some of our programs. So thank you very much. Cyber world is an endless world. Nobody can define the boundaries of cyber world. And that is why how it is being manipulated, how it is being distorted, it is not so easy to know. One can check after an hour or so, but many times as a police officer we have seen that the initial damage is most impacting. And that is why how to bridge that gap between the fact check of reality and fiction, that would be a great factor to determine the success of the program. Since this is Urdu journalist gathering, तो आप इजाजत दीजिए मुझे थोड़ा हिंदी उर्दू में बात करने के लिए। बहुत पहले किसी ने कहा था कि speak a lie 1,000 times and it becomes truth. अगर आप किसी झूठ को 1000 बार बोलिएगा तो वो हकीकत लगने लगता है। और सोशल मीडिया और इस तरह के प्लेटफॉर्म से अब इतनी ताकत हो गई है इस कॉन्सेप्ट को कि 1000 बार क्या, आप लाख बार 10 मिनट के अंदर उसको सर्कुलेट कर सकते हैं। तो उसका इंपैक्ट कितना ज्यादा होगा, कितना नुकसान करने वाला होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज, आज जब सोसाइटी में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हो रहा है, पहले से बहुत ज्यादा लिटरेसी रेट हुआ है, और सेलफोन के जरिए सोशल मीडिया का रीच लगभग हर घर, हर इंसान के पास पहुंच गया है। तो ऐसे हालात में सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है हर एक इंसान की जिनके पास इंटरनेट का कनेक्शन है। और आज की तारीख में जिसके पास भी सेलफोन है, लगभग सभी के पास इंटरनेट कनेक्शन है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि एक अपना सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। इसमें कोई भी चीज जो सेंसेशनल लगता हो उसको फॉरवर्ड करने के पहले 1000 बार सोचें। खुदा न खास्ते अगर वो सही भी है, अगर गलत है तब तो खैर दूसरी बात है, लेकिन अगर वो सही भी है फिर भी आप उसको फॉरवर्ड नहीं करें। बहुत बार कुछ सही चीज को भी गलत समय पर अगर फॉरवर्ड किया जाए तो उसका इंपैक्ट नेगेटिव होता है। इसलिए इंडिविजुअल की जो जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बहुत बड़ी है। पहला, इंटरनल विजिलेंस अपने लेवल पे होना चाहिए। उसके बाद इस तरह के ग्रुप जो है, उर्दू जर्नलिस्ट ग्रुप, तेलुगु जर्नलिस्ट ग्रुप, नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया, उनका अपना एक जो इंटरनल विजिलेंस, इंटरनल सेटिस्फाइंग फैक्ट चेक का जो एक सिलसिला है, वो भी आगे रहेगा। पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है कि ऐसे बहुत वीडियो सर्कुलेट हुए जिसका हैदराबाद या हिंदुस्तान से कोई मतलब ही नहीं। बांग्लादेश का वीडियो यहां सर्कुलेट हुआ, सीरिया का वीडियो यहां सर्कुलेट हुआ, चेचनिया का वीडियो यहां सर्कुलेट हुआ, जिसका हिंदुस्तान से कोई मतलब ही नहीं है कभी। तो जब कोई देश तरक्की करता है मेरे दोस्त,
और जब देश की इज्जत एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ऊपर जाती है तो दूसरे को पत्थर फेंकने का मौका मिलता है। और आज जब हमारा देश वर्ल्ड का 5th सबसे बड़ा इकोनॉमी है जीडीपी में, और आज जब हम लोग जो हमारे पुराने कॉलोनियल मास्टर्स थे उनसे हमारा जनरल जीडीपी अब ज्यादा हो रहा है, ऐसी स्थिति में अपने ऊपर और भी बड़ी जिम्मेवारी आती है कि जो भी चीज जिसमें सेंसिटिविटी रहती है उसको बहुत तरीके से हम लोग हैंडल करें। किसी भी सोसाइटी में किसी भी समय जरूर कुछ ना कुछ फॉल्ट लाइंस होंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे जिसके कारण फ्रिक्शन हो सकता है। वो फ्रिक्शन सिक्योरिटी का सबसे बड़ा टेस्ट यही रहेगा कि एक एडवर्स सिचुएशन को भी हम लोग कितने मैच्योरिटी कितने सीरियसनेस के साथ हैंडल करें। तो आज no amount of word is enough to express the satisfaction and the gratitude to all the organizers, and particularly supported by the US CG here and the entire team. On behalf of the Telangana Police, I express my sincere thank and hearty congratulations to the entire team for this wonderful initiative, and I hope that this will continue and more number of journalists, more and more number of social media activists, I would say, because social media has become a platform for big activism now. It should penetrate in every field and everywhere. Thank you so much. Jai Hind. I'm expressing my sincere gratitude to US Consulate General Hyderabad and Department of Journalism, Usmania University for conducting the fact-check training for Urdu journalists. All the sessions were very informative and insightful, which taught us a lot about the importance and methods of verifying information in the digital era. We learned how to use various tools such as Google Lens, reverse image search, inbuilt EXIF metadata, etc. and techniques to check the credibility and accuracy of sources, data and claims. With the help of such tools and techniques, we are now able to identify and counter misinformation, disinformation and propaganda that can harm the public interest and democracy. We have learned different methods and standards for fact-checking depending on the source, context and purpose of the information. However, some common steps involved in fact-checking are identifying the claims or statements that need to be checked based on their relevance, importance and potential impact. Researching the sources and evidence that support or contradict the claims or statements using credible and diverse sources. Evaluating the quality and reliability of the sources and evidence, considering their timeliness, accuracy, transparency and bias. Rating the claims or statements based on their factual accuracy using clear and consistent criteria and scales. Reporting the results of the fact-checking process, explaining the methods, sources, evidence and rating used and providing links or references for further verification. As we all aware that in India, very few Urdu fact checkers who are countering the misinformation and disinformation. In this scenario, the efforts made by US Consulate General Hyderabad and Department of Journalism, Usmania University is highly appreciable. For the first time in India, the two in Hyderabad, large number of Urdu journalists were trained to debunk the misinformation and disinformation. The training was very timely and relevant. I feel more confident and empowered to be responsible and critical consumer and producer of information. I hope to apply what I learned in my personal and professional life as well as share it with others.
I appreciate the opportunity to interact with the experts and fellow participants who share their insights and experiences. I am thankful to all the resource persons, especially Professor Stevenson sir, M.A. Majid sir, M.A. Basi sir, Sudhakar Reddy sir, Satya Priya ma'am, and others. Thank you very much. बेकवेल केक हाउस। हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।